Morning, everyone. Let's wait minutes for everyone to join. Okay. Good morning, Sino. Morning. So let's start. Have waited enough. So as all of you know, I've been classes every day of the week at 10 a.m. targeted for prelims. Okay, and every day we're discussing about 25 questions from different topics. So आज हमरो geography रो अछि Tuesday. So for regular updates, you can join the Telegram channel of CAX IS. CAX IS कर दो. CAX IS. You can join it for updates. Okay. चलो. So आज geography session में we'll have Odisha geography MCQ question. ठीक है जी. So didn't take long because हमें already Odisha geography रो पूरा comprehensively nearly 10 classes नहीं किया हमें यूट्यूब रे प्लेलिस्ट अच्छी देखि परियो ओडिशा ज्योग्राफी पूरा कंप्लीट ओडिशा ज्योग्राफी सारी देइछे ता सहित इवन लास्ट वीक रे आई टुक एमसीक्यू सेशन इन द इवनिंग राइट सो आजिर क्लास रे आई होप there is not much difficulty that you will face if you have done those classes. If you have not, after this class go and watch them. It will be surely helpful for your prelims. Okay, so let's start with the first question here. Which of the following rivers is not a tributary of the Mahanadi River? Tel, Ib, Baitarani, and Sevnath River. So, give the answer. I'll give you 15 seconds. Single, single line question, statement based भी नहीं so it should be relatively easier to do.
बैतरणी वेरी गुड सीनू द आंसर इज बैतरणी मोर महानदी रिवर रो ट्रिब्यूटरीज कोन कोन हैव देवनाथ देव से दो आंध ओंग ओंग दिल दा नाउ they are the main tributaries. Actually these are all the tributaries. The first seven are the major tributaries. Tira and Jhaun, these are considered as minor tributaries of Mahanadi. Vaitarani. Very good, Pradeep. These questions are easy. If you want somewhat more difficult questions, I would MCQ last class से जोड़े टिके difficult questions ଥିଲେ ତା ସହିତ ଆଗକୁ କିଛିଟା climate related questions it might be confusing ए सेशन रे बेसी difficult question किछि नाही ठीक अछि one difficult questions ए सेशन रा सर जाऊ गोटे recorded class अछि मोर last week रही YouTube रे ओडिसा MCQ रे ओडिसा geography MCQ रे you can watch that चलो अरे यार सॉरी तो महानदीर ट्रिब्यूटरीज रे like I said we have देवनाथ देव आंध ओंग तेल या नाउ नाउ एटारू कोटा largest tributary you have to tell me the largest tributary of Mahanadi which is it you tell me which tributary falls into the Hirakud Dam okay and one more question for you with largest tributary in Odisha in Odisha answer these three okay Pradeep be sure these are easy questions Nath A seen yeah fall in good different answers okay so largest tributary we have Seonath largest tributary in Odisha is Tel okay this is Seonath and this will be Tel and the one which falls into the Hirakud Dam is Ib okay Ib river it falls into Hirakud Dam Ib river ta gote ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ all of these they are all of these are left bank tributaries while these are the right bank tributaries okay now these are the tributaries ठीक अछि हमें distributaries विषय रे भी कथा हेतले
प्रदीप लॉन्गेस्ट महानदी आई ओडिशा कौन कहया चाहूँ आई कुडंट अंडरस्टैंड ओके प्लीज रिफ्रेम व्हाट यू आर ट्राइंग टू से ओके चलो नेक्स्ट होची हम देखिबा कोन ट्रिब्यूटरीज देखिदेले ट्रिब्यूटरीज विषय सब जानि गेले हां गोटे जिंस हमको मन रखियार अछि कोन ना जो जोंक रिवर टा ठीक अछि जोंक रिवर टा this forms a very small part of Odisha Chhattisgarh boundary okay now महानदी को पॉइंट रे ओडिशा को एंटर करछि के कहबो एंट्री पॉइंट ऑफ महानदी ओडिशा को प्लेस एंड को डिस्ट्रिक्ट आंसर दैट ओके देन तापरे कोन ट्रिब्यूटरीज देखले डिस्ट्रीब्यूटरीज कोन रहउची यार बहुत सारा डिस्ट्रीब्यूटरीज अछि प्राची वाखाई काठजोड़ी राइट दया भार्गवी एक्सेट्रा तो बहुत सारा एमती ट्रिब्यूटरीज रोचे हमर महानदी रो जो सॉरी डिस्ट्रीब्यूटरीज रोची and it is creating a very large arcuate shaped delta in the coastal region of Odisha ठीक अछि now question for you Jharsuguda and Bargarh district Jharsuguda and Bargarh district dita करे केमते एंट्री करबो गोटे डिस्ट्रिक्ट रे एंट्री कर that is Padigaon okay place name is Padigaon in Jharsuguda okay that is the correct answer here now distributaries भितरे we have one such distributary jar name ta tame mate kahibo that distributary dash is a distributary of Mahanadi that merges with Brahmani river ये क्वेश्चन ना आंसर टा मते को ओके very good Sinu the answer is Virupa okay so Virupa हमरो महानदी रे गोटे डिस्ट्रीब्यूटरी जोटा ब्राह्मणी रिवर रे जाई ओके so this is all about Mahanadi आ गोटे जिंस रहला कोठी माउथ हेची माउथ इज एट फॉल्स पॉइंट नियर पारादीप ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करिया चलो which of the following districts in Odisha is known for its mining of bauxite कलाहांडी जाजपुर सुंदरगढ़ रायगढ़ को Shashikant D. Okay. Let's see. Let's wait for others to answer.
सेम सीन ओके चलो तो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन डी रायगड़ा हमर किंतु जिनस कौन कहल सुंदरगढ़ हैज द मोस्ट रिजर्व्स बट रायगड़ा क्वेश्चन ऊपर डिपेंड कर देखो हमर एटी क्वेश्चन कौन पचारची माइनिंग ऑफ बॉक्साइट राइट दिस मीन्स कि आमे एक्चुअली जो माइनिंग एक्ट परफॉर्म करूचे सेटा सबुठ अधिक कोठी होची आमे माने खोलिकी ता भितरु केमिति रिजर्व्स बाहर करचे ठीक अछि बट इन केस ऑफ सुंदरगढ़ ओडिसा रे सबुठ अधिक अछि ठीक अछि जो पंचपटमाली रीजन टा रहिला सेटा बोथ सुंदरगढ़ एंड रायगड़ा रे टिके स्प्रेड हेकी अछि एंड सेई जो जिंसटा रहिला एज अ रिजल्ट माने सुंदरगढ़ रे मेजर पार्ट रहउची तार बट रायगड़ा रे ऑपरेशनल माइनिंग जोटा को हमें कहते एटा बेसी हो ठीक अछि so the answer here will be रायगढ़ now very good well done now एबे टिके एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कोन ना इन केस ऑफ इंडिया हमें देखिबा टॉप 5 स्टेट्स को केस रे इन केस ऑफ रिजर्व्स एंड इन केस ऑफ प्रोडक्शन ठीक अछि ता होची खोला होची ओके खोला होची मु कहली कोन खोला होची ओके हां देश आंध्र प्रदेश गुजरात या झारखंड ठीक so this is the reserve okay केते अमाउंट रे कोठी अछि सेटा हमें देखुचे but what about the production रे ओडिशा keeps at first position then आसीजिबो गुजरात then झारखंड then छत्तीसगढ़ why do we not see andhra pradesh in the production because जो रीजन रे हमर रिजर्व्स मिलुची आंध्र प्रदेश रो मेजॉरिटी ऑफ द रीजन जोठी हमको रिजर्व्स मिलुची सेटा होची फॉरेस्टेड ट्राइबल एज अ रिजल्ट माइनिंग ता सेही स्केल रे ही परनी जो स्केल रे होबा कथा ओके एज अ रिजल्ट हमर आंध्र प्रदेश रे लो प्रोडक्शन रहउची हाई रिजर्व अछि बट लो प्रोडक्शन ठीक अछि देन आ गोटे इकोनॉमिक ज्योग्राफी एंगल रु गोटे प्रोडक्शन ओडिशा झारखंड छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र गुजरात नो सी द प्रोडक्शन डेटा इट माइट चेंज ईयर ऑन ईयर ठीक अछि मु तमे को डेटा फॉलो करछो सेटा तमे चेक करिवो as far as I know 2025 रो एंड भितरे the data I gave you that is the most correct one ठीक अछि जदि ता परे किछि नुवा डेटा आस्थियो देन आई डोंट नो बट तमे जदि पुराना डेटा रु को बहिरु देखि कि कोच सिनु देन that is not correct for civil service you have to stay updated ठीक अछि now aluminium manufacturing process ओपीएससी रो टिके मुंडो खराब थाए तो से विषय रे भी पचर पारे ये देखि दवा so the ore is bauxite रु हमें कोन करछे bauxite टा कोठु बाहरची माइंस रु तापरे कोन होची तापरे सीधा एल्युमिनियम बाहर थो राइट
बॉक्साइट रु हमें बॉक्साइट इज नॉट अ मिनरल बॉक्साइट होची गोटे ओर माने कोन गोटे रॉक ता देरे जो मिनरल हम काढियार अछि ता सहित बहुत सारा इंप्योरिटीज भी मिसी से जो मिनरल टा भी अछि सेटा प्योर मिनरल फॉर्म रे नै सेटा गोटे ऑक्साइड फॉर्मेट रे अछि तब एल्युमिना इज एन ऑक्साइड ऑफ एल्युमिनियम ठीक अछि ऑक्साइड ऑफ एल्युमिनियम नाउ ए जो ऑक्साइड टा रहला सेटा को हमें बॉक्साइट रु बाहर करछे देन तार रिडक्शन वगैरह करके डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस करके ओके तो एल्युमिनियम हमें पाउचे फ्रॉम द केमिकल रिएक्शंस नाउ गोटे बहुत ही इंपोर्टेंट जिंस तुमको मन रखियार अछि विथ रिस्पेक्ट टू एल्युमिनियम प्रोडक्शन कोन ना हमरो लेट्स से माइंस ए जगह अछि दिस इज द लोकेशन ऑफ माइंस बॉक्साइट माइन टा होची एठी अछि तो हमें बॉक्साइट माइनिंग करी काढले संग संगे डिस्टेंस लेट्स से 2 किलोमीटर रहला इवन 10 भी धर दियो बहुत ही क्लोज तो क्लोज डिस्टेंस ठीक अछि बॉक्साइट काढी की हमें कोन करले ना तारी पाखरे ही very close to this we have alumina plants now eta कोन पई करा हुए because हमें जदी 6 टन ऑफ बॉक्साइट नबा तादुरु हमकु 3 टन रा एल्युमिना मिलियो एंड सेथुरु हमें 1 टन रा एल्युमिनियम पाइबा तो 6 टन रु हमें ओनली 1 टन पाउचे तो जदी हमें ए 6 टन टाकू कोन करबा ना माइन पाखरु नै की एल्युमिनियम जोठी कन्वर्जन हबो डायरेक्टली गोटे प्लांट रे बहुत दूर रे नाउ फॉर कन्वर्टिंग एल्युमिना इनटू एल्युमिनियम देयर इज वन रिक्वायरमेंट जोटा की कोन ना नीड चीप इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही अधिक इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट रुहे तळे हमें एल्युमिना को एल्युमिनियम को कन्वर्ट करछे तो सेटा तो माइंस मानक पाखरे मिलियो बोली किछि गारंटी नै जदी मिलिगला बहुत भलो कथा सेठी ही कन्वर्ट करदा बट सेठी मिलियो बोली गारंटी नै तो से केस रे कोन करा से केस रे दे कन्वर्ट दिस 6 टन तमे 6 पैकेज कोरियर करिथिबो केबे ना केबे लाइफ रे तो तमे गोटे केजी रा पैकेज कोरियर करिया को जति टंका पडुची आधा केजी रा सेति टंका पडियो कम पडियो ऑब्वियसली तो सेति पई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कमेइबा को कि जो एल्युमिना को कन्वर्ट करिया को जो प्लांट गुरा को they are always kept very close to the mines ठीक अछि so this is the second question चला आगु जीवा next question which is the primary factor that makes the climate of Odisha a tropical monsoon climate high altitude proximity to the equator influence of the Himalayan winds oceanic influence from the Bay of Bengal को एटर आंसर को it might get एटा देखिया कोन कहउछ तुम माने very good Shashikant so yes the answer is D एठी कोन ही आउ एक्स्ट्रा कवर देखो ट्रॉपिकल मानसून कोन ट्रॉपिकल मानसून टाइप रो क्लाइमेट कोन we have tropical monsoon ro characteristics कोन we have dry winters and we have hot and humid summers
जो समर रे जो रेनफॉल टा हुए दैट रेनफॉल इज कॉज ऑफ monsoon rather southwest monsoon. ठीक अच्छे, this is the tropical monsoon climate that we understand. ये जो tropical monsoon climate रहिला entire India ही comes under the tropical climate monsoon climate. Entire of India this comes under tropical monsoon type of climate, right? Okay, तो ओडिशा हमर एट रहिला ए रीजन रे, तो एठी भी ऑब्वियसली हमर रहबो को ओके को ब्रांच ऑफ द monsoon affects the Odisha region. Monsoon ro southwest monsoon ro we have two branches. तो को ब्रांच टा अफेक्ट करे ओडिशा को? चलो को आंसर को ओके, वेरी गुड पंचानन, द बे ऑफ बंगाल. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा. which is which is the largest inland lake in Odisha? Chilika Lake, Banjari Lake, Hirakud Reservoir, Kanjia Lake. को okay, one answer has come as Tartai. Okay, so one is going with Chilika Lake. Anyone else, or the rest of you are skipping? Okay, Shashikant is going with D. Anyone else? Summer is going with C. Okay. So the answer here will be option C. So Sinu, the first there are two Sinu 0301. Okay, the answer you gave that is wrong. Chilika Lake, भाई चिलिका लेक टा इनलैंड लेक की चिलिका लेक टा ओशन से तो कनेक्टेड नहीं की. How can you say that it is the largest inland lake? Chilika should be the first one you need to eliminate. ठीक अच्छी. Now some of you might have thought कि question भूल अच्छी, because पिला बेलू तमे पढ़ी आस्थिबो लार्जेस्ट लेक माने हमरो अनसुपा, but that is with a कौन कहबा क्वालिफिकेशन और गोटे कंडीशन से, तो कौन लार्जेस्ट नेचुरल लेक एटा होची अनसुपा रो. ओके, बट if we are considering the largest with both man-made and the natural lakes, एटा हबो हीराकुद. now comment रे को हीराकुद को मसिया रे बनितला, which year was it established?
ओके, हीराकुद डैम ऑब्वियसली हमें जानचे इट इज ऑन महानदी, तीनटा डिस्ट्रिक्ट रे अछि, संबलपुर, झारसुगुड़ा एंड बरगढ़। ओके, हम देखिले इब रिवर आसी कि तार भितर पडुची, ता सहित कोन लार्जेस्ट डैम ऑफ लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट डैम ऑफ एशिया। ओके, 1957, वेरी गुड सीनू। वेरी गुड, there are two, 1957 it is. Now also it is the largest man-made okay now हीराकुद को हीराकुद रो गोटे स्पेशलिटी अछि कोन ना आउ गोटे जिंस को होबे हीराकुद रो टाइप, व्हाट टाइप ऑफ डैम इट इज an earthen dam, माने माटी फाटी सब मिसी की एटा बना है एंड एटा होची वर्ल्ड रो लॉन्गेस्ट earthen dam। ठीक अछि, एई तक होची तुमको हीराकुद विषय रे इंफॉर्मेशन मन रखिया पड़ो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा, which is the longest beach in Odisha? Chandipur, Gopalpur, Puri, Baleswar। should be very easy, I think एथरर OSSC CGL prelims रे आस्तला, right? so try to answer। गोटे फन फैक्ट जानछो हीराकुद विषय रे, हमर हीराकुद जतबे डैम बनिला 1950s रे, से पीरियड रे होची ऑब्वियसली लोक मान डिस्प्लेस हेतिबे एंड तांग घर पर सब बुड़ी तो एमिति किछि लोक थले जो मान निजर गाई फाई बुली पळे आस्ते, तो हीराकुद मझरे गोटे डैम अछि जोठी की गाई माने वाइल्ड डोमेस्टिकेटेड टू दे हैव कन्वर्टेड बैक टू बिकमिंग वाइल्ड कैटल। ओके, तो सेडा कैटल आइलैंड को। Okay, so everyone is going with option C, very good, that is the correct answer। beach टा होची longest beach in Odisha। now out question होची ए चारटा का ऑप्शन भितरु which is called as the vanishing beach। vanishing beach कोडा, vanishing beach माने कोन ना जिंस होची जे हमर तमने ज्योग्राफी रो बेसिक्स रे पढ़थियो कोन ना टाइड्स विषय रे, गोटे थाए हाई टाइड, गोटे थाए लो टाइड। हाई टाइड और लो टाइड रो डिफरेंस कोन? टाइड बेसिकली कोन पीरियडिक राइज एंड फॉल इन द लेवल ऑफ वाटर। तो से जो राइज एंड फॉल होची, जो राइज टा होची सेटा को हमें कोन कहूचे हाई टाइड एंड जो फॉल टा होची सेटा को हमें कहूचे लो टाइड। एटा होची हाई टाइड रो जो पीक पॉइंट रहला सेटा एंड लो टाइड रो जोटा लोएस्ट पॉइंट रहला ता भितरे जो डिस्टेंस आसीबो सेटा को हमें कोन कहूचे टाइडल रेंज कहूचे। वेरी गुड मोनालिश, मोनालिसा। ओके,
Monalisa. Monalisa, very good. The vanishing beach is Chandipur beach. Okay, very good. Low tide re sea water recedes nearly 5 kilometers. এই জিনিসটা কোন পাই হুଏ এই जो vanishing beach वाला phenomenon টা ଚାନ୍ଦିପୁର beach ରେ কোন ପାଇ ହୁଏ ଦେଖ ମୁଁ ଏଠି जो draw କଲି ଏଠି ତମେ जो ଦେଖୁଛ ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ beach ଟା ଥିବ ଏଠି beach ଟା ରହିଲା ତ ତାର slope ଟା ଟିକେ ଅଧିକ ଅଛି but in case of ଚାନ୍ଦିପୁର it is very gently sloping right ତ ଏଠି ଦେଖ same level ରେ ମୁଁ ଆଣିବି high tide ର same level ରହିବ then low tide ର ବି same level ରେ देखि पारछ ए जो लीनियर डिस्टेंस हमें देखिबा जदी बीच रे चालिकी गले ए डिस्टेंस टा अधिक अछि ना ए डिस्टेंस टा अधिक अछि obviously in this case we have the longer distance पूरा पानी बहुत पछू पळेला भलिया लागिवो why because it has a very gentle flow सेटा ही रीजन जोटा पई कि हमें देखुचे कोन ना 5 किलोमीटर पर्यंत पछू पळौची द सी okay so with this question is done चला आगु जिबा next question which district in Odisha is known for its significant production of jute Kolahandi Ganjam Jagatsinghpur Cuttack try to answer को जल्दी को एते जण अछो आंसर कोन जणकर भी बाहर नहीं जणा नहीं गेस करो कि भूल करिवो भूल करिकि तापर रियलाइज करिवो जे ठीक आंसर एटा तापर सेटा मन रहबो नले किछि न करी खाली बस जिवो जदी आंसर जणा पडिवोनी आंसर तो जणा पड़ जिवो मु कहबी ऑब्वियसली बट तमरो मन रहइबो ओके ओनली 4 पीपल हैव आंसर्ड बाकी कोडे गलो बाकी 10 जण कोडे गले ए सर सिंह कटक वन सिंह गंजाम ए अरे भाई हाड़े गला प्रदीप तमे गंजाम लिखिछो एआई ताकू ट्रांसलेट कर देजी तू गांजा गांजा ओके तो एआई रो एटा होचे गोटे बड़ प्रॉब्लम से किछि भी कर दोची so the correct answer here is Cuttack okay now हमरो जूट विषय रे किछटा बेसिक इंफॉर्मेशन हमें जानथवा दरकार is the second most important natural fiber तमे एबे चैट रे कुहो तमे एबे चैट रे कुहो जे फर्स्ट मोस्ट important कोटा okay for jute we require few climatic conditions कौन it should be hot it should be humid and it should have abundant rainfall okay तो ए जो रेनफॉल रहिला हमरो रेनफॉल केते दरकार रेनफॉल शुड बी बिटवीन 120 to 140 सेंटीमीटर ह्यूमिडिटी
80 to 90%. हॉट माने 24 degree to 35 degree Celsius. This is the okay, Sinu, well done. The first one is cotton. Okay, so these are the conditions required for jute cultivation. Usually it केबे sow करा जाए February is sown, and after 8 to 10 months during the month of by the month of October we harvest. Okay, it is an or it is a water intensive crop. यादरे बहुत पानी दरकार एथि हमको abundant rainfall and humid nature रहिले ही भलो. ओके, नाउ एटा होची जूट रो बेसिक्स. हां गोटे आउ गोटे जिंस जोटा तमे जानि थिवा दरकार. सिविल सर्वेंट घरे पचारिबे, घरे थांती ना जणे जणे अंकल थांती, जणे जणे आंटी थांती, अरे तू कौन पढुचु यूपीएससी सॉरी ओपीएससी पे प्रिपेयर करी, सिविल सर्विस पे प्रिपेयर करी, कौन करूचु तू, तमे सेठी कहि परिबो मु एटा करूची जोटा कले तमठु बहुत अधिक नॉलेज मते एंड सेति पई मु बहुत कथा कोहेनी. ठीक अछि, तो तापर तमे कोन कहबो ना जो जूट कल्टीवेशन हमरो इंडिया रे थिला, इंडिया रो दीटा फेज रे हमें कंसीडर करिया. कोन ना गोटे होची प्री इंडिपेंडेंस, आउट होची पोस्ट इंडिपेंडेंस. प्री इंडिपेंडेंस रे बेंगल प्रोविंस इट वाज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट. कौन थिला सेठी सबुतक जूट कल्टीवेशन होतला, सबुतक इन द सेंस की नियरली 80-90% प्लस जूट मिल गुराक भी सबु बेंगल प्रोविंस रे थिले. बट जेतबेले इंडिपेंडेंस हला देयर वाज द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान. तो जो ईस्ट पाकिस्तान रहला दैट वाज पार्ट ऑफ बेंगल. तो सेई जो ईस्ट पाकिस्तान रीजन रहला जोटा को कि एबे हमें बांग्लादेश ना रे जानचे, दैट रीजन गॉट ऑल द जूट कल्टीवेटिंग एरियाज. जोठी कल्टीवेशन होतला ते एरिया तक पळेला बांग्लादेश को और ईस्ट पाकिस्तान को. बट सबु तक मिल रही गला इंडिया साइड बेंगल रे, दैट इज वेस्ट बेंगल रे. ठीक अछि, golden fiber, very good. So this is the story of how jute cultivation in India reduced or got hit by a very bad phase in the late 1940s. Okay, but we are Indians, हम कुछ ना कुछ करके जी लेंगे. तो 1950 रु 1980 पर्यंत there was a very कौन कहबा intensive approach to increase jute cultivation. तो इंडिया रे से पीरियड रे steady growth of cultivation and production of jute देखा गला for the 3 decades spanning 1950 to 1980. but post 1980s हमें कौन दिखिया पाइले ना as a result of rise of synthetic fibers, then very erratic climatic behavior, ते सब उपाय जूट कल्टीवेशन पुणी थरे डाउन हे गला. नाउ इंडिया रे हाईएस्ट जूट कल्टीवेशन रा शेयर अछि वेस्ट बेंगल रे which is nearly 80%. ठीक अछि, 80% of the total cultivation is done by West Bengal. ता छडा आसाम, बिहार, झारखंड, ओडिशा एई सब रीजन रे भी कल्टीवेशन हुए टिके टिके. बट ऑब्वियसली 80% जदी वेस्ट बेंगल रहउची बाकी सब थरे केते ही होतु, राइट. एंड ओडिशा रे ता भितरे कटक रे सबठो अधिक हुए. ठीक अछि, बालेश्वर रे भी हुए किछि, जाजपुर रे भी किछि हुए. बट अगेन ओडिशा रे बहुत ही इनसिग्निफिकेंट प्रोडक्शन हुए ऑफ जूट, बट स्टिल सेथरे कटक रो शेयर ता अधिक. चलो आगु जिबा. नेक्स्ट क्वेश्चन, which district in Odisha is known for its
significant production of sugar cane Khordha, Ganjam, Dhenkanal, Bargarh. Go. Khordha, Dhenkanal, Ganjam, Bargarh. Which should be the correct answer? Now this happened with Mona Lisa. Ganjam got turned into marijuana. See, that is where we will see a distinction. Okay, Mona Lisa. That is where most of you are wrong. All of you are going with option B. That is wrong. Ganjam ro tame jo aska कहलो, that region is famous for but production highest, rather cultivation and production of, here we have sugar cane. Sugar. Okay, that is the difference. हमारा बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट रे हमें बेसी देखिया पाउचे सुगर केन प्रोडक्शन, बट इन केस ऑफ गंजाम डिस्ट्रिक्ट सेठी हमें देखिया पाउचे कोन ना सुगर फैक्ट्रीज बहुत अछि. ओके, नाउ एटा अगर डिफरेंस बुझिलो कल्टीवेशन रो एंड सुगर प्रोडक्शन रो एटा अगर डिफरेंस अछि. अगेन ओडिशा सुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट नुह. ओके, तमाने जदि नेशनल लेवल रे देखिबो ओडिसा रा ना टॉप 5 टॉप 10 भितरे भी आसेन. बहुत रेयरली 8 रु 10 भितरे जदि केबे केबे आसुथबो ओडिसा इन केस ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज मोर देन एनफ. तो सेति पई एते इंपोर्टेंट नुह मन रखिबा जे ओडिसा रो रैंक कोन केमिति से सब जिंस दरकार नै. बट हां, कोन हमकु मन रखियार अछि ना शुगर रो और रादर शुगर केन रो क्लाइमेटिक कंडीशंस कोन कोन, टेम्परेचर रेंज केते एंड रेनफॉल रेंज केते, से दिटा का हमकु जानियार अछि. नाउ टेम्परेचर रेंज होची 20 रु 30 डिग्री सेल्सियस भितरे रहिबो. ठीक अछि, बट गोटे ये रहउची कोन 20 रु 30 डिग्री सेल्सियस ओवरऑल. बट जेतबेले राइपनिंग हबो सेतबेले 12 टू 16 डिग्री सेल्सियस रेंज रे रहिले इट हेल्प्स विथ द राइपनिंग. बेसिकली आमे जेतबेले सुगर केन को काटिबा को रेडी होबा से पीरियड रे राइपनिंग हे जाइथिबा दरकार एंड से पॉइंट रे हमु लो टेम्परेचर दरकार होची. ठीक अछि. रेनफॉल रे कोन, रेनफॉल रे इट इज रिक्वायरिंग 80 टू 100 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल. तो बहुत अधिक दरकार नै कि बहुत कम रेनफॉल दरकार नै. बट कोन ना हमरो लो रेनफॉल इनिशियली प्रेफर करा जाय. एटा होची एनुअल रेंज रहइबा रेनफॉल रो एनुअली, बट इनिशियली it should be less than should be somewhere near 70 50 to 70 centimeter per year. Okay, not even per year, say period रे खाली जो period रे हमें तो करूचे हमर कोनटा को sugar cane. Okay, then आउ कोन रहला, it is very temperature sensitive. temperature जदि टिके एक्स्ट्रा कम हे गला then
माने ए जो 12 रु 16 डिग्री रु से जदी 12 जगह रे 10 डिग्री सेल्सियस हे गेला कि 5 डिग्री सेल्सियस हे गेला भी द क्रॉप विल गेट डैमेज्ड। ठीक अछि। हां चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। What type of climate is predominantly experienced in Odisha? Tropical wet, tropical monsoon, desert, temperate. Wow. Tropical monsoon, very good. The correct answer for this question is obviously tropical monsoon. ଯେତେବେଳେ ଆମର ଚାରଟା ऑप्शन दी बट मु कोन कहली दीटा एक्स्ट्रा ऑप्शन ऐड कली ई आ एफ। ओके गोटे होची ट्रॉपिकल सवाना आउट होची सब ह्यूमिड टाइप क्लाइमेट। तो एबे जदी मु एई दीटा का ऑप्शन ऐड कर दिली लेसे मु सी आउ डी काटी देली तो ऑप्शन रे एई चारटा का ऑप्शन अछि। व्हाट शुड बी योर आंसर हियर? ई एफ ए बी ई चारटा भितरु कोडा हबो? एंड ई ए क्वेश्चन सेम अछि। ठीक अछि क्वेश्चन रे मु किछि चेंज करनी बट आई हैव एडेड टू मोर एक्स्ट्रा ऑप्शन। ओके so if you get a question like this choose option B is a poorly framed question। ए क्वेश्चन टा ठीक नुह ए क्वेश्चन टा भूल अछि। ठीक अछि exactly both B and E could be the answer, even B, E and C all three are correct। all three categories or all three climate types are experienced in Odisha but it depends on the type of classification you are using। जनरली जदि तुमको पचारला खाली एया ही रहला स्टेटमेंट ओडिसा रे को टाइप रो क्लाइमेट प्रीडोमिनेंटली एक्सपीरियंस करा होची इन दैट केस यू आंसर ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट। बट जदि तुमको स्पेसिफिकली मेंशन है नाउ जदि ऑप्शन रे ट्रॉपिकल मॉनसून नहीं ट्रॉपिकल सवाना अछि ट्रॉपिकल सवाना मार दो भूल हबनी। ट्रॉपिकल मॉनसून इट इज एक्सपीरियंस इन एंटायरिटी ऑफ ओडिशा एंटायरिटी ऑफ इंडिया तो ओडिसा रे भी हुए ऑब्वियसली दैट इज नॉट डिफरेंट। ट्रॉपिकल सवाना केतेबेले हबो जोटा को कि हमें एडब्ल्यू टाइप कहूचे दैट इज अंडर कोपेन्स क्लासिफिकेशन राइट। दिस कोपेन्स क्लासिफिकेशन according जदि क्वेश्चन है थिवो व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इज प्रीडोमिनेंटली एक्सपीरियंस्ड इन ओडिशा अकॉर्डिंग टू कोपेन्स क्लासिफिकेशन एंड ऑप्शन गुरा को ए बी ई एफ थिवो तमे अनडाउटेडली ई मारियो। बट सिमिलरली जदि तुमको देथिवो कोन ना अकॉर्डिंग टू हॉर्नथ्वाइट क्लासिफिकेशन तमे कोन करिवो लिखिवो सब ह्यूमिड टाइप। ठीक अछि अरे बाबू मॉनसून कोस्टल एरिया रे हुए तमर कोन जदि दिल्ली रे जाई बसिबो तमको कहबो को टाइप रो क्लाइमेट एक्सपीरियंस करा होउची एठी तमे कहबो मॉनसून आसुनी दिल्ली रे। हां इंडिया रो एंटायरिटी ऑफ इंडिया एक्सपीरियंसेस मॉनसून it does not have anything to do with coastal region or interior region। obviously coastal region has more pronounced effect of the monsoon rainfall
कारण सेठी बेसी रेनफॉल होउची भितरे बेसी रेनफॉल होउनी बट दीटा जगह रे मानसून ही होउची ठीक अछि तो बुझी पारलो मु एठी कोन कहया चाहिए दीटा ऑप्शन ऐड करिकी जदि तुमको देथिबो खाली जहां हमें स्टार्टिंग रू क्वेश्चन देखिले सेया जदि देथिबो दिस मच हमारा आंसर इज ऑप्शन बी बट जदि ऑप्शन रे एमिति किछि ओटे खेला करथिबो कि क्वेश्चन रे एमिति मेंशन करथिबो किछि स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन विषय रे पचारथिबो कोपेन रो इट मस्ट बी ट्रॉपिकल हॉर्न व्हाइट रो इट मस्ट बी सब ह्यूमन आंसर से दीटा केस रे पूरा सेम अछि बट इन दिस केस this is the most appropriate answer जदि एटा नहीं then you go for this option E okay चलो एबे आगु जिबा next question which of the following is the primary source of rainfall in Odisha एटा एक्सप्लेन भी करबिनी आंसर को हमें आगु को बढ़िया जल्दी जल्दी आंसर को very good so answer here is option C southwest monsoon चलो आगु जिबा next question what is the average annual rainfall received by Odisha 800 mm 1000 mm 1400 mm 1600 mm को एटा भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एटा भी मु किछ कहबिनी दिस जस्ट अ फैक्ट एठी किछ एक्सप्लेन करियार नहीं हमकु one answer has come anyone आउ क्या को आसुनी so this is the correct answer well done चलो आगु को जिबा which district of Odisha receives highest amount of rainfall now this question is something that we can discuss गंजाम कोरापुट मालकानगिरी खोर्धा आंसर करो okay again they are going with very good स्मार्ट अच्छा सब कोन करिया तो
highest is Malkangiri, Rapport. Okay, ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜ district ବି ଆସିଯିବ. So these regions they receive maximum rainfall, whereas Baudh ହଉଛି lowest amount of rainfall receive करे. Okay, now ଜିନିଷ ହଉଛି କଣ ନା ଆମର partial of pollen. Okay, तो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन कौन ना स्पेस रिलेटेड को एरिया रे को रीजन रे अधिक तो ओडिसा रे मैं तीनटा रीजन नहीं किछि किछि रे चारटा मेंशन में बट तीनटा भी क्लासिफाई कर दिले चलियो कोन ना गोटे जगह रे हाई रेनफॉल दैट इज वन कैटेगरी आउट कैटेगरी होची मॉडरेट रेनफॉल लेस रेनफॉल और लो रेनफॉल हाई रेनफॉल रीजन टा कोठी एटा होची दीटा सेक्शन कोन सदर्न ओडिशा और नॉर्दर्न ए दीटा कर जो माउंटेनस रीजन रहिला those which are part of the eastern ghat ए दीटा को होची कोन ना हमरो रीजन ऑफ हाई रेनफॉल सेठी हाईएस्ट रेनफॉल मिले ओडिसा नॉर्दर्न ओडिशा मयूरभंज एरिया सदर्न ओडिशा मालकानगिरी कोरापुट से रीजन राइट तो ए सब जो रीजन रहिला एटी कोन होची ना बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ईस्टर्न घाट्स सेठी कोन होची मॉनसून विंड गुरा को ऊपर को उठुची ओरोग्राफिक रेनफॉल करूची दैट इज द रीजन एठी हमर कोन रहिला कोन कोन सेटा को सिमिलीपाଳ मेघासेनी माउंटेन रीजन रहिला एंड एठी हमर पोटांगी चंद्रगिरी माउंटेन रीजन टा रहिला राइट तो ए दीटा का रीजन रे हमें सबटो अधिक रेनफॉल देखिया को पाउछ मॉडरेट रेनफॉल कोठी होची मॉडरेट रेनफॉल इज सीन इन द कोस्टल रीजन कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स पुरी जगतसिंहपुर खोर्धा कटक ए सब रीजन रे मॉडरेट रेनफॉल होची नसी कोस्टल रीजन and state districts with a coastline different पुरी बालेश्वर गंजाम ए सब रीजन कोन डिस्ट्रिक्ट्स विथ अ कोस्टलाइन खोर्धा कटक से माने आसी जिवे कोथरे कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स रे डिफरेंस अछि ठीक अछि तो से एंटायर रीजन रे हमें कोन देखुचे मॉडरेट रेनफॉल देखुचे ए जो हाई रेनफॉल रहला दिस इज समवेयर 1600 रु 1800 सेंटीमीटर रेन मिलीमीटर रेनफॉल ऑन एवरेज देखे एटा होची एमएम लेस रेनफॉल एरिया कोटा रहला हमरो वेस्टर्न ओडिशा बौद्ध बरगढ़ बलांगीर संबलपुर जहाँ सब इंटीरियर पार्ट्स ऑफ ओडिशा रहला सेमानंगर कोन रहउची लेस रेनफॉल रहउची and the range is somewhere around 1200 ru 1400 mm rainfall okay so this is the spatial distribution of rainfall in Odisha ठीक अछि चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा during which months does Odisha generally experience the peak of its monsoon season summer season March to May May to July June to September October to December
July going with who are going. Okay. चलो now of Odisha re, just like India, we can divide the entire 4 seasons: summer, then southwest, then we have spring, then we have winter season. Right now, summer period होची कौन ना मार्च रु मार्च रु स्टार्ट है मिड जून पर्यंत समर सीजन जाए. ओके इटारे कौन होची ना एवरेज टेम्परेचर समर मार्च रु एवरेज टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस 40 डिग्री. देन मोर कौन रोची पीक मंथ्स एप्रिल एंड मे during which temperatures can go as high as 45 degree Celsius in the interior parts. ठीक अच्छे जो मैंने संबलपुर बलांगीर से साइड रे रोचो टिटलागढ़ से सब एरिया रे रोचो तम माने ए समर सीजन रे 42 डिग्री 45 डिग्री टेम्परेचर तम माने पे नॉर्मल रही राइट. बट इन केस ऑफ कोस्टल रीजन्स कौन होची ना टेम्परेचर समवट मॉडरेट रोची ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ओशन 36 37 डिग्रीज अराउंड रहिबो. ओके तो आमे कौन देखले पीक मंथ कोटा एप्रिल आउ मे एठी ऑप्शन रे नाही. तो व्हाट शुड बी द आंसर हियर मार्च टू मे. द ऑप्शन इज एक्चुअली आई थिंक दे हैव मेड इट रॉन्ग. एप्रिल एंड मे होबा कथा. ओके दिस शुड बी द करेक्ट आंसर. ठीक है जी नेक्स्ट क्वेश्चन बुझबा चलो. ओके आंसर तो मु कहि दी छी. व्हाट इज द एवरेज टेम्परेचर रेंज इन ओडिशा ड्यूरिंग समर सीजन 15 रु 25 25 रु 35 30 रु 40 35 रु 45. ठीक से शुणुथलो कि नहीं एने जणा पड़िबो को Manas. Manas, I think you are new here, right? Answer is option. They are going with option D. Sure. Just in the last question, I told you the range. No, I am not asking where you are from. Class को first time पे असलो, right? Hey, ओ भाई वाने I said 30 degree to 40 degree Celsius in the last question. ଏବେ just 2 minute तले discussion करथले, right? This is the answer. Option C. ठीक है जी. हाईएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर होची 45 डिग्री पर्यंत जाए. ठीक अछि पीक मंथ्स रे. बट पीक मंथ्स तो खाली रुहेनी ना. मु कोन कहली मार्च
एप्रिल एटा होची पीक मंथ या धरे अप टू 45 डिग्री सेल्सियस पर्यंत जाए जोटा कि हायर रेंज रे बट ए पीरियड रे टिके लो रुहे 45 डिग्री टा पुनी कोठी ना इंटीरियर कोस्टल रे केते रहबो से पीरियड रे कोस्टल रे रहबो 36 35 डिग्री सेल्सियस धरतियो बट मार्च मास रे इंटीरियर रे केते रहबो 40 डिग्री सेल्सियस पाखा पाखी रहबो कोस्टल रे देखला बेलू दैट विल बी लेस देन दैट 31 डिग्री सेल्सियस सेमती टाइप रो रहबो जून रे भी सेमती इंटीरियर पार्ट 40 डिग्री सेल्सियस की 38 डिग्री सेल्सियस एमती रहबो ता तळकू टिके कमी जिवो इन द कोस्टल रीजन so 30 to 40 is the answer okay चलो which of the following factors most influences the climate of Odisha proximity to Himalayas proximity to Bay of Bengal influence of Thar desert elevation above sea level एटा भी गोटे बहुत ही लड्डू क्वेश्चन जो हमरो जनवरी 26 अगस्त 15 रे लड्डू मिले पिला बेले जाई खाई दियो खाली ठिया हेगी तो सही भलिया लड्डू क्वेश्चन तो आंसर दियो पीवी पीकी वाइन राइट तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी वेल डन चलो आप लोगों को मिलते हैं 7 करोड़ नेक्स्ट क्वेश्चन which season in Odisha is characterized by cool and dry conditions summer monsoon winter spring कोटा वेरी गुड विंटर करेक्ट विंटर रे कौन होची को पीरियड रु मिड अक्टोबर रु फेब्रुआरी तक चलिबो एटा विंटर सीजन जो अक्टोबर पीरियड रहला एंटायर अक्टोबर पीरियड रे हमें कोन देखछे साइक्लोनिक एक्टिविटीज देखुछे अक्टोबर एंड नवंबर रे भी किछि आसे ओके साइक्लोनिक एक्टिविटीज दैट आ गोटे पीरियड रे भी ओडिसा रे साइक्लोन देखा जाए को पीरियड रे को मंथ रे देखा जाए सेटा को गोटे तो अक्टोबर नवंबर रे देखा जाए आ गोटे पीरियड रे भी देखा जाए सेटा को पीरियड को मास रे देखा जाए नाउ दिस अक्टोबर नवंबर वाला साइक्लोन दिस इज मोर डेंजरस compared to the other period when we witness the cyclones ए पीरियड टा कौन कहती पोस्ट मॉनसून साइक्लोनिक एक्टिविटी ठीक अछि सिमिलरली ता पूर्वरु गोटा अछि प्री मॉनसून साइक्लोनिक एक्टिविटीज जोटा कि मे मंथ आड़े हुए ओके जुलाई नुह प्रदीप यस सत्यजीत इट इज मे जून से पीरियड रहे हुए दिस इज द प्री मॉनसून साइक्लोनिक एक्टिविटी ओके इवन हमें मॉनसून पीरियड रे हमें साइक्लोनिक एक्टिविटीज विटनेस करू बट ये जो प्री पोस्ट मॉनसून और प्री मॉनसून पीरियड रहला ना ए सिचुएशन में हमें कौन विटनेस करू ना देखो तो होची गोटे या जे साइक्लोन रो डिफरेंट कैटेगरीज अछि गोटे होची लो प्रेशर एरिया
गोटे हूँ डिप्रेशन, गोटे हूँ डीप डिप्रेशन, भाई बहुत डिप्रेशन में पड़े। देन साइक्लोनिक स्टॉर्म, okay, then here cyclonic storm, then we have very severe cyclonic storm, then super cyclonic storm. All of these are considered as cyclones. ठीक अच्छे, साइक्लोन रो बेसिक मीनिंग होची एटा होची, गुड मॉर्निंग सौमित, anonymous isotherms, okay, isotherms टा ठीक है, after we finish I'll tell it, okay. Now cyclones कौन रहिला ना हमरो, आई थिंक आइसोथर्म विषय रे आउ गोटे सेशन ने हम कथा आइतले, बट स्टिल आई विल एक्सप्लेन अपेक्षा कर। तो साइक्लोन रो बेसिक मीनिंग होची जे एनी काइंड ऑफ रोटेटिंग सिस्टम जो थरे की विंड वायलेंटली एमती रोटेट होतुवा सेंटर्ड अराउंड अ लो प्रेशर, ओके, एटा होची हमरो साइक्लोन रे आसीबो। तार गोटे स्पेसिफिक टाइप होची साइक्लोनिक स्टॉर्म, जो थरे की टिके माने लो प्रेशर लेवल टा टिके अधिक थाए, माने लो प्रेशर टा लो थाए, ठीक अछि, एंड विंड स्पीड टिके मीडियम लेवल रहता है, दैट हैपेंस इन मॉनसून पीरियड। ये जो साइक्लोनिक एक्टिविटी हुए सेटा हमें देखुचे साइक्लोनिक स्टॉर्म देखुचे। इन पोस्ट मॉनसून सीजन हमें ए जिंस ओरा का बेसी देखुचे, सिवियर वेरी सिवियर के सुपर रो पॉसिबिलिटी टा अधिक अछि। प्री मॉनसून रे डिपेंड करे ता मूड ऊपर, ठीक अछि, बट जनरली पोस्ट मॉनसून हैज द मोर डेंजरस साइक्लोन्स, ठीक अछि। लाइन जॉइनिंग हैविंग इक्वल टेंपरेचर, ओके, देखो आम स्टूडेंट माने ही तम मानू कह दउछन, पुराना स्टूडेंट माने नुवा स्टूडेंट मानू को आइसोथर्म रो मीनिंग कहि साइलेनी, राइट। तो आ हमर कोन रिक्वायरमेंट रहबो पर, दैट इज द एम, तम निजे निजे सेल्फ सस्टेनिंग है कि एग्जाम क्लियर करो। नेक्स्ट, which phenomenon is primarily responsible for the heavy rainfall in the coastal districts of Odisha during monsoon? Okay, एबे ही जस्ट कहली लोकल कन्वेक्शन, साइक्लोनिक स्टॉर्म्स, ओरोग्राफिक रेनफॉल, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, मैं एबे कहली तो एटर आंसर तुम माने कह दियो, मु सेति भीतर आइसोथर्म टा बुझे दोची। नाउ सी आइसोथर्म जस्ट लाइक के पचारलो एनोनिमस, तुम ना कहि दबो जदी बेटर हबो, ओके। नाउ जस्ट लाइक योर फेलो स्टूडेंट Somit has said, isotherm कोन ना, it is a line that connects places having the same temperature, similar नुह कि सेमिति किछि वर्ड नुह, सेम सबु पॉइंट रे, एटा होची पॉइंट ए, बी, सी, डी and E, all of these will have, let's say, a temperature of 25 degrees Celsius. ए लाइन टा होची कोन ना, द 25 degrees Celsius isotherm. Isotherm, it is just something that helps us map out the temperature distribution, ठीक अछि। टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन विषय रे जदी हमहु पढियार अछि, हमें आइसोथर्म विषय रे पढुचे, दिस इज अ रिलेटिवली न्यू कांसेप्ट। सिमती गोटा प्रेशर विषय रे जतळे हमें पढुचे आइसोबार विषय रे, सेटा रे कोन ना से लाइन ऊपर सब पॉइंट रे प्रेशर सेम रहइबो। हां, ए जो आइसोथर्म रहिला कोन रहइबो, अलगा आइसोथर्म गोटे बनि परिबो फॉर 26 डिग्री सेल्सियस, राइट। सिमिलरली आ गोटे बनि परिबो फॉर 24 डिग्री सेल्सियस। तो एमती बहुत सारा लाइन बनि थाए, बाय जॉइनिंग सब पॉइंट रे टेम्परेचर मेजर हैला, राइट। तो सेही जो पॉइंट गुरा रहला से मानु जॉइन करिकि जो पॉइंट रे सेम टेम्परेचर रहउची, देखो आइसोथर्म टा एमिति हेई पारे, आइसोथर्म टा एमिति हेई पारे, आइसोथर्म टा गोटे स्ट्रेट लाइन हेई पारे, आइसोथर्म टा गोटे सर्कल हेई पारे, राइट। इट कैन बी एनीथिंग, शेप तार डिपेंड करिवो कोन ऊपर ना को प्लेस रे से सेम टेम्परेचर टा हमकु मिलुची, ठीक अछि। विथ दैट हमें कोन करूचे ना, हमें जो को रीजन रे अधिक टेम्परेचर रहउची, जे सेही जगह रे हाई टेम्परेचर रहउची, तो से जो पॉइंट गुरा का रहिला हाई टेम्परेचर वाला 25 ऊपर जतक रहिला 25 डिग्री सेल्सियस ऊपर, हमें सेटा को भाबी देले हाई टेम्परेचर रीजन। तो सेही जो रीजन गुरा रहिला सेटा को हमें इनक्लोज कर देगी कोन बनै देले, द ट्रॉपिकल रीजन। तापर हमें टिके पोल साइड को पळेले,
देखिले मझी मझिया जो मिड लैटिट्यूड रीजन रहला सेठी दी टाइप रो रहउची टेम्परेट सेटा को हमें कहले बट हमें कोन कहले गोटे होची वार्म टेम्परेट गोटे होची कोल्ड टेम्परेट काहे कि ना कोल्ड टेम्परेट रे टिके टेम्परेचर कम रहउची वार्म रे टिके अधिक रहउची टेम्परेट टा पूरा यूनिफॉर्म रहउ देन हमें पोलर रीजन को गले सेठी देखले आइसोथर्म गुरा कर सबुतक आइसोथर्म विथ द वेरी लेस टेम्परेचर 0 डिग्री 1 डिग्री 5 डिग्री सेमिति टाइप रा आइसोथर्म गुरा सेठी अछि तो सेटा को हमें पोलर रीजन बोली कह देले ठीक अछि तो दैट इज द यूज ऑफ आइसोथर्म एंड द मीनिंग ऑफ आइसोथर्म अच्छा तमे आइसोथर्म पचार न तमे आईटीसीजेड पचारछो आइसोथर्म बेसिकली होची जो पॉइंट आईटीसीजेड आ आइसोथर्म दिटा को अलगा एनोनिमस ठीक अछि आइसोथर्म मु कोन कहली places joining the line joining the places having same temperature isotherm ର meaning होची सेटा ITCZ होची पूरा अलगा ITCZ is not an isotherm ठीक अछि ITCZ रो टेम्परेचर सहित और आइसोथर्म सहित किछि लिंक नै ITCZ रो लिंक कोथरे अछि ना जो पॉइंट रे दिस इज द लाइन ओके ITCZ is the line where the trade winds come and meet northeast trade wind and southeast trade wind सेई दीटा को जो लाइन रे आसी की मिसंती सेईटा को ही हमें कहूचे आईटीसीजेड and that is affected by the position of sun okay affected by position of sun ठीक अछि ओके एटा हला हमर अर्थ ओके अर्थ रे कोन हला दिस इज द 0 डिग्री लैटिट्यूड हमर इक्वेटर एटा होची ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एटा होची आर्कटिक सर्कल एटा होची ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एटा होची अंटार्कटिक सर्कल ठीक अछि 23.5 डिग्री नॉर्थ 5 डिग्री नॉर्थ एटा होची 90 डिग्री नॉर्थ 0.5 डिग्री साउथ 0.5 डिग्री साउथ 90 डिग्री साउथ एतिकी तो तमे पिला बेलु जानिथिबो जे सन रो पोजीशन टा मैक्सिमम ओवरहेड या ऊपर रहबो in the northern hemisphere and in the southern hemisphere it will be this कोन tropic of cancer होची कैप्रिकॉर्न तो सन जेतबळे लेट्स से केस 1 ठीक अछि एटा होची हमर केस 1 नबाय केस 1 कोन इक्वेटर रो ओवरहेड अछि एटा होची केस 1 तो कोन हबो एई पॉइंट रे इंटेंस हीटिंग हे कि लो प्रेशर जोन गोटे क्रिएट हबो now this low pressure zone is the equatorial low pressure zone now sei point ku mara trade winds asiki misi okay ei point ta hela amara etc बट सन जेतबळे धीरे धीरे ऊपर को मूव करिया स्टार्ट करियो से पॉइंट रे कोन हबो ना हमर लो प्रेशर जोन टा भी धीरे धीरे मूव करिया स्टार्ट हे जो लो प्रेशर विल शिफ्ट लाइक दिस ये जो लो प्रेशर रीजन टा रहिला ए पार्ट टा दिस आल्सो विल शिफ्ट एटा कोन हबो धीरे धीरे शिफ्ट हे के आसी जो टुवर्ड्स द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ठीक अछि इट इवन क्रॉसेस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन केस ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर काहे कि ना सेठी अधिक लैंड अछि लैंड गेट्स हीटेड फास्टर सेति पई सेडा हुए तापरे कहम जेतबळे पुनी सन धीरे धीरे एमति तळको आसी अपरेंट मूवमेंट हबो तो एई केस रे बहुत कम डिफ्लेक्शन हबो टुवर्ड्स द साउथ काहे कि ना साउथ रे बेसी वाटर अछि सेति पई बेसी डिफ्लेक्शन हुए ठीक अछि आईटीसीजेड कोन बुझलो एनोनिमस shifting of isotherms okay
सी शिफ्टिंग ऑफ आइसोथर्म्स तमे जोटा कहउछ एबे ओके एटा होची कोन ना देखो obviously that also is related with apparent movement of the sun हमर जदी मैक्सिमम टेम्परेचर ता कोड रहबो एई रीजन रे रहबो तापरे ता पाख रीजन रे जोरा को टिके सब ट्रॉपिकल रीजन असला हमर एई रीजन रे these will have less temperature जो ग्रेडियंट ता चेंज हबो ओके देखो केस 1 एठी कोन रहबो एठी लेट्स से हमें पाइबा 45 डिग्री सेल्सियस वाला आइसोथर्म ठीक अछि बट इन दिस केस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जोटा हमर समर सोल्स्टिस रहला ओके से केस रे जो 45 डिग्री आइसोथर्म ता सेटा शिफ्ट ही जो जोटा की आईटीसीजेड पाखा बाकी रहउतबो दैट विल शिफ्ट टुवर्ड्स द नॉर्थ एट जो इक्वेटर पाखरे कोन हबो इक्वेटर पाखरे टिके लेस टेम्परेचर वाला आइसोथर्म आसीजो तो दैट is also linked with this entire system ITCZ केमते शिफ्ट होची ता सहित आइसोथर्म्स भी शिफ्ट होची ठीक अछि अरे आ कोन माने मिस्टर समित तो मोठो आगु आंसर दे दोछन चैट रे आ ताले कोन माने आ कोन कहबी रियली रियली गुड समित बहुत ही भलो क्लैरिटी अछि तमरो ज्योग्राफी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा क्या गला रेनफॉल ओके यार आंसर समस्त कोन दै छ देखिए कोन कॉन्टिनेंटल एंड ओशनिक टेम्परेचर डिफरेंट हबो सती कोन कहउछ तमे okay chalo let's move to the next question which of the following months mark the beginning of winter season in Odisha बहुत ही इजी डिस्कस कर लेबे जून सितंबर अक्टूबर दिसंबर कोटा हबो कहि दियो देन विल मूव अहेड चलो चलो जल्दी आंसर करो डी डी समित ये क्या कर रहे हो भाई मेरे अक्टूबर स्टार्ट्स फ्रॉम मिड अक्टूबर एबे ही टिके आगु हम डिस्कस कले विंटर सीजन विषय रे मिड अक्टूबर रु फेब्रुआरी जाए जीवो ये जो अक्टूबर रहिला अक्टूबर प्लस नवंबर मासरे हमें देखिबा सिवियर साइक्लोन्स रो केसेस देखिबा राइट मोर डेंजरस साइक्लोन्स ए पीरियड रे हमें देखिबा तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा which of the following climatic features is most common in interior districts of Odisha okay interior district विषय रे पचारची ह्यूमिडिटी अधिक एक्सट्रीम हीट ड्यूरिंग समर फ्रीक्वेंट साइक्लोन्स हेवी मॉनसून रेन्स को तमे तमरो बाकी सब सांग कोडे गले पायल ये से सब कोडे गले हमरो पिक्सेल परडा के नांती आजी extreme heat in summer due to continentality effect very good continentalism no anonymous continentality okay continentality continentalism something else okay that is the answer here is extreme heat that is option B okay chalo agu jwa due to continentality effect as all of you have promptly mentioned okay अच्छा अच्छा which coastal district of Odisha is highly susceptible to cyclones due to its proximity to Bay of Bengal पुरी केंद्रापड़ा बालेश्वर गंजाम कोडा कहि दियो समित जदि पारुचो सेमानु कहि दियो
ओके ओके ठीक अछि। यार जी ठीक आंसर कहबो ताकू मो तरफ रु गोटे 10 टंकिया कप आइसक्रीम। ठीक अछि। कौचंदी प्रदीप सीनु एंड सत्यजित आर गोइंग विथ केंद्रापड़ा। केंद्रापड़ा ओके बाकी गई। See, this question is something that should be considered as wrong. काहींकि ना ओडिशार कोस्ट इज हाईली ससेप्टेबल। देखो तमे जदी कहियाउ चाहबो एमती किए कहि परियो जे पुरी रे सबटु अधिक ये हेछि तो पुरी माने डैमेजिंग साइक्लोन हेछि सेति पई हमें पुरी को कंसीडर करिया। केंद्रापड़ा रे अधिक होछि केंद्रापड़ा अधिक, बालेश्वर रे अधिक होछि बालेश्वर अधिक। तो एमती दिस इज नॉट अ गुड क्वेश्चन। ठीक अछि। हमें जदी एटा को माने ए क्वेश्चन टा को गोटे सिविल सर्विस रे पकेवा दिस इज अ रॉन्ग क्वेश्चन। ठीक अछि। बाकी जदी तमे ए क्वेश्चन रा आंसर गोटे दबा को चाहूच इट विल बी केंद्रापड़ा। ठीक अछि। केंद्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट दिस कम्स एज द मोर रिलायबल आंसर इन दिस केस। नाउ एठी चारटा का ऑप्शन ही ठीक ऑप्शन। ठीक अछि। तो ए क्वेश्चन टा गोटे हाउ वुड यू नो कि ए क्वेश्चन रे तमरो आंसर टा ठीक है कि नहीं। एठी तमरो मु कहली केंद्रापड़ा और आउ जने केस जे एग्जामिनर लेट्स से एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन ओपीएससी रे आसी गला। इन दैट केस एग्जामिनर कहबो जे मु पूरी रो ही आंसर रखिबी आंसर की रे। तमे जे ओपीएससी वाला को बाडेबो कहबो जे तमे काई पूरी रखिलो तो से केस रे भी तो तमरो भूल हो। तो सच क्वेश्चंस आर दोस जोठी की तमरो कंफ्यूजन राइज हुए। जानि थिबो जो क्वेश्चन करा तमे ऑब्जेक्ट करो एग्जाम आसला परे ग्रुप रे बसी घंटा 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 अननेसेसरीली गोटे चलथिबो तमरो जुक्ति तर्क निज निज भितरे जोटार किसी वैल्यू नाही। ता जगह रे तमे खाई पी की सोई की रेस्ट नै की आउ एग्जाम जदी भलो हेची मेंस पई केमती प्रिपरेशन करिवो सेटा भाबिया जगह तमे बसी की झगड़ा करछो। ओके तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन एटारे कंफ्यूजन हुए। ठीक अछि। सत्यजित भाई बालेश्वर कौन पई ही ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। What is the effect of Odisha's climate on its agriculture? Helps in growing crops like wheat and barley, supports cultivation of rice, pulses and oil seeds, limits agricultural activities, promotes growth of desert plants. कौन हबो?
गुड चलो देखिया कौन सपोर्ट्स कल्टीवेशन ऑफ राइस पल्सेस एंड ऑयल सीड्स तो ऑब्वियसली ओडिसा रो जो टाइप रो क्लाइमेट अछि सेठी हमें व्हीट कल्टीवेशन करि परिवानी तो ऑप्शन ए ऑटोमेटिकली गोज आउट लिमिट्स एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नो लिमिटेड एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हमर कोठी होची ना इंटीरियर रीजन तो सेठी टिके वाटर अवेलेबिलिटी कम होची सेठी पई the options they get reduced in the interior but entire ओडिसा रे तो सेमती होनी promotes growth of desert plants ओडिसा रे desert plants completely wrong xerophytic vegetation हमर ओडिसा रे बेसी देखा जायनी राइट डेजर्ट ही तो नहीं देखा जो पड़ो तो दिस इज द करेक्ट आंसर ठीक अछि नाउ ए क्वेश्चन रु प्रिलिम सरू ठीक अछि प्रिलिम सरला परे त माने मोरो टेलीग्राम चैनल जदि अछ टेलीग्राम चैनल रे मोरो टेलीग्राम ये निजर जो आईडी टा मेंशन करछि माने कोन करबो सेठी जाई कि गोटे मेंस क्वेश्चन मु एबे दु तारा आंसर टा लिखि कि कोन हां ठीक अछि this is the question कौन how does the climatic condition of Odisha affect its agriculture ठीक अछि 20 मार्क रो क्वेश्चन आंसर करके गोटे बढ़िया से मते पठेइबो ठीक अछि पीडीएफ रे चलो आई होप क्वेश्चन दा स्क्रीनशॉट नहीं गलो कि लिखि रखि देलो एबे आगु जिवा नेक्स्ट क्वेश्चन which of the following is the primary physiographic feature of Odisha भाई physiographic feature Himalayan Eastern Ghats Western Ghats Indo-Gangetic Plains को कोटा very straightforward question straightforward answer दबो आगु को बढ़िया सी अरे सी किए कहलो रे भाई सी ओके ओके ये टाइपो होई ठीक अछि अदरवाइज बहुत ही बड़ा भूल ओके तो ऑब्वियसली द आंसर इज बी ईस्टर्न घाट्स ओडिसा रे जो ईस्टर्न घाट रीजन रहला तार ना कोन ये जो फिजियोग्राफिक डिवीजन रहउची ओडिसा रा सेथरे ये जो ईस्टर्न घाट रीजन को कोन को आउची ता नाटा मत लिखि दियो which of the following is the highest peak in Odisha को that hill Amit no that is one part okay Garjat hills are a part of the eastern ghats बट मु कोची ईस्टर्न घाट रो जो रीजन टा रहिला सेटा को ओडिसा रो फिजियोग्राफिक ओडिसा रो पांचटा फिजियोग्राफिक डिवीजन अछि सेही पांचटा रो कोटा ईस्टर्न घाट रो रीजन टा को कवर करे ओके सेटा पचाउची ओके so all of your answers are correct Devmali okay Devmali is the highest peak amaro
1672 मीटर हाइट रो ठीक अछि तापर कोन रहउची दिस देवमाली the highest peak then we have Inkaram then Kalikonda then Chandrika all of these four are in Koraput ठीक अछि तो एई चारटा को होची ओडिसा रो हाईएस्ट पीक्स all the four these are higher than 1600 meters ठीक अछि और not all four चंद्रिका is less than 1600 बाकी तीनटा का 1600 रु अधिक तापरे हमर आसीबो नियमगिरी तापरे महेंद्रगिरी तापरे मलयगिरी एमती आसीबो ओके या परे नियमगिरी then we have Mahendragiri we have Malayagiri okay this is the order central mountainous yes that is the hill mountainous Karjat hills they are a part of this hill mountain and they mark the edge between the central plateaus and the eastern ghats सेटा प्लेटू वाला क्वेश्चन जो डिस्कस करथिले लास्ट टू लास्ट टाइम बधे तळे हमें डिस्कस राइट चलो वी आर डन विथ दिस देन द मेजर रिवर्स नेक्स्ट क्वेश्चन होची द मेजर रिवर सिस्टम इन ओडिशा इज गोदावरी महानदी कृष्णा नर्मदा लाइक कोन ये क्वेश्चन कोन ही या को कहवा राइट आंसर तो समस्त को जणा थिबो आई होप आई वोंट हैव टू गिव द करेक्ट आंसर हियर जदी जाननो देन सॉरी टू से माय फ्रेंड you are in the wrong place तमे सिविल सर्विस रो प्रीलिम्स एथरो दियनी मे बी मु एठी कमेंट करबिनी अनलाइक अदर पीपल जो माने कोनी तमे दियनी देई परिवनी तमरो औकात नाही से सब मते भल लागेनी तमे जदी पढिबो डिलिजेंटली तमे सब किछि कर परिबो ठीक अछि तो से टेंशन नहीं तमे ए वर्ष प्रीलिम दे पारि सेति की मु कहि देले फेल हो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा which of the following is the largest plateau in Odisha कलाहांडी बरगढ़ संबलपुर मालकानगिरी को चलो आंसर को या पर आ गुटी क्वेश्चन रहला and will be done with the session today see एटा भी गोटे ambiguous question but from what I have researched answer here is मालकानगिरी ठीक अछि तो मालकानगिरी रीजन में जो प्लेटू आछि देखो ओडिसा रे एमती कलाहांडी प्लेटू बरगढ़ प्लेटू संबलपुर प्लेटू एमती किछि नै तीटा सेक्शन अछि प्लेटू रो गोटे होची पाम्पोस पाल्लड़ा वाला से जो सेक्शन टा रहला आउट होची नवरंग जयपुर सेक्शन एटा दीटा ही प्लेटू सेक्शन एंड तारा नेमिंग से ही है एमती डिस्ट्रिक्ट बेस्ड नेमिंग नहीं सो दिस शुड बी द रॉन्ग क्वेश्चन ठीक अछि देन लास्ट क्वेश्चन which district of Odisha is known for its famous Similipal biosphere reserves in the eastern Ghats Dargarh Ganjam Mayurbhanj Khurda okay this is the last question again another laddu question try to answer या परे जदि तमरो ओडिसा ज्योग्राफी एमसीक्यू रो बोको
मरिनी देन आई विल सजेस्ट हमर कैक्स आईएएस चैनल रे ए लास्ट वीक रे ही आ गोटे अछि जोटा कि घंटे रो गोटे सेशन हिची अबाउट ओडिशा ज्योग्राफी एमसीक्यू ठीक अछि सेतरे टिके अलग टाइप रो क्वेश्चन अछि मयूरभंज वेरी गुड एथरे आउ कोन ही तो मयूरभंज अच्छा गोटे जिंस कोन ना ए लास्ट जिंसटा कह देबी तापरे विल एंड द क्लास ठीक अछि एटा गोटे इंपोर्टेंट जिंस अबाउट द मोर कोन सिमिलीपाल राइट सिमिलीपाल ऑब्वियसली एनवायरमेंटल एंगल रू बायोस्फीयर रिजर्व टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क सब थरे आसु राइट एंड इवन एलिफेंट रिजर्व भी अछि ठीक अछि तो से जिंसटा हमें छाड़ दो से पार्ट को हमें जाउनी सेटा हमरो डिस्कस करछे बहुत भलो से सेटा तो अगेन बायोडायवर्सिटी ऑफ ओडिशा वाला चैप्टर रे पढ़ दो मु एबे मोर कहबार ये हो सिमिलीपाल माउंटेन्स जो रहिले सिमिलीपाल हिल्स जो रहिले आर दे पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स और नॉट आर पाल हिल पार्ट ऑफ घाट्स और नॉट एटार आंसर के कहि परियो को ऑल ऑफ यू आर करेक्ट ठीक अछि डिफरेंट सोर्स रे डिफरेंट जिंस मेंशन ठीक अछि ये कहूची ईस्टर्न घाट्स ये कहूची यस कहूची यस वाला कोन कहउचंती ना से जो ईस्टर्न घाट रा कंटीन्यूअस रेंज रहला तारि सहित ही अछि तो इट इज पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स ता सहित किछटा जिंस भी मैच करछि सेति पई नो वाला कोन कहउचंती ना जो सिमिलीपाल हिल्स दे आर ऑफ वोल्केनिक ओरिजिन एंड सेति पई से पार्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स नुहन ठीक अछि दैट इज व्हाट द लॉजिकल आंसर इज ठीक अछि एंड आई पर्सनली प्रिफर दिस ठीक अछि जदि तमे आउ को टीचर पाखरे देखिलो जे ये यस जो कहले दैट पार्ट ही इज करेक्टली एक्सप्लेनिंग देखो यस रो किछि सेमती एक्सप्लेनेशन के देना जे हां से सेम कोस्ट लाइन रे चलची पार्ट हे के गोटे लाइन रे सेठी पडिची माने सेटा को हमें पार्ट कर दोछे बट द रीजन इज कि वोल्केनिक ओरिजिन हमरा देखो अगेन सबु माउंटेन वोल्केनिक ओरिजिन ठीक अछि कौन डिफरेंस किछटा टेक्टोनिक एक्टिविटीज रुहे किछटा वोल्केनो इरप्ट है कि वोल्केनिक माउंटेन बन जो हमरो वोल्केनिक कोन जोटा बनथाय तो एटा होची सेही टाइप रो टेक्टोनिक एक्टिविटी रुहे जोटा कि ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट टेक्टोनिक एक्टिविटी रुहे तो सेथि पई दिस सिमिलीपाल हिल्स this is not part of the eastern ghats it is part of the peninsular plateau region ठीक अछि ए समित छोटा नागपुर रो कहिले हां यू कैन से कि छोटा नागपुर रो कोन ना साउथ ईस्टर्न एक्सटेंशन जोटा ठीक अछि so with this let's end the class thank you everyone have a good day anonymous I might have one more session in the evening तमे गोटे काम करो मोरो टेलीग्राम चैनल टा जॉइन कर दियो मु सब बळे क्लास रो अपडेट सेति दे कोन क्यूआर टा की कह दो तमे मोर आ गोटे क्लास देखि दियो सेथरे क्यूआर मु यूजुअली देताई से क्यूआर टा स्कैन करके जॉइन कर दियो नले सर्च करिया चाहिए जदि सिविल सर्विसेज सिविल सर्विस
ठीक अछि एटा होची चैनल रो नेम सर्च करिवो जदी पाइलो भलो कथा नले कोडा अदर क्लास यूट्यूब रो ही जो सेशंस अछि आदरे जाई देखि दबो मोरो मु क्यूआर देछि सेटा स्कैन करके जॉइन कर दबो तुमको क्लास रो अपडेट्स मिल जिवो ठीक अछि बाकी मु एवरी मंगलवार आ शुक्रवार इवनिंग इवनिंग राति 9 रे आसे एंड मंगलवार एंड शनिवार सकाळ 10 रे प्रस्तुति सहित हमरो जो मैराथन हितला मैराथन से ओरा अलगा रहइबो ठीक अछि चलो हैव अ ग्रेट डे